decentralization and accountability as an agenda of modern public administration. Basically, I am from legal background, so I have no such backup regarding this public administration. It is my views and opinions which I have put it in this paper and I am going to share with you. Public administration, in a very layman language, is the management of resources of men and material to achieve some common goal. And this common goal is to do the welfare of the people. So, this public administration, as we have the image of public administration in our ancient period, that public administration is something which is done by an elite group of bureaucrats. And bureaucrats are those who are having unchecked or uncontrolled power. They have no such accountability. They are free to do what they think to do. They are not accountable to anybody else. So this kind of public administration is not acceptable, especially when we are entering the era of democracy and people are demanding much and much freedom and individualization. So this kind of administration is now nowhere exists. And at a global level, there is a demand that there should be democratization of the administration. So to bring this democratization in the public administration, some values, some principles are required to be inculcated in our public administration. So two principles which I have chosen, one is decentralization and the another is accountability. Decentralization is devolution of the power. It is a power sharing. Now we are talking about the decentralization, that means the powers should be divided among several groups. Power should be enjoyed by all. So this is decentralization. Why decentralization is needed in the public administration? To give the autonomy to several groups so that they could enjoy their discretionary power and can take the decision. And as far as the accountability is concerned, when we are empowering the power with some groups, so there should be some measures or systems to make them accountable, to fix their liability. So accountability in this regard is required or essential. So what is the correlation between, in my common understanding, is that decentralization is about discretionary power, and accountability is the management of this discretion, because this discretion should not be absolute in any terms. There should be some contours, there should be some limit within which this discretionary power should be used. So as far as Indian system is concerned, India has developed and evolved certain principles, certain setups to bring accountability, to bring decentralization in its administrative functioning. For bringing decentralization, what things are going on, or what is the constitutionality of this idea of decentralization? So our constitution, in its very clear terms, specifically said that where it defines law, where it defines a state, it not only include in a state or in law only act of the parliament, only the parliament, but some authorities who are working within the India under the authority of the government of India, either aided by the government of India or not. But they are covered as a state, they are bound to respect, to follow some basic standards or principles. So this is the decentralization, and especially after the 74th Constitutional Amendment Act, the idea of decentralization gets popularity, and its work and effect we can see, we can judge, we can evaluate. As far as the accountability is concerned, and to bring the accountability in the system, there is very specific article in our constitution, like freedom of speech and expression. But to enjoy this freedom of speech and expression, we should have some means or methods to get the information regarding the working of the authorities. So this is the very acceptable truth that there is a need to
there is a need to develop some mechanism to bring accountability in the administrative setup. So for that, some downtrodden or social groups take initiative. And this MKSS movement, which is originated from the Rajasthan state only, get popularity and take the struggle of national level. And the outcome is that now we have Right to Information Act 2005. So we have these kinds of systems, we have developed these kinds of systems, but still, what we are practicing, what kind of administration we are promising to give to the people and what we are giving. Because these mechanisms have been developed, but not in practical terms it is workable in real terms. Because why I am saying that, if we look at the International Transparency Index, if we look at the Corruption Index, India is leading one, among the leading one countries. So that means, although we have developed these setups, but we are not practicing it in real terms. So people, although have the power to enjoy that freedom, although have the power to use the method to make the authorities accountable, but they are not capable enough to understand what they have in their hands. So there is a need to look at these aspects and to bring the real reform in the administrative system, to bring actual or real transparency and accountability. I use some internet material, but before that I have some my personal perceptions regarding this public administration and what should be the shape of new public administration. So I focus on this accountability and decentralization because here I can correlate it with the constitutional provisions. So I take this and make this alright. Thank you so much. Thank you. And any future your plans to take it in a research work kind of a thing, because you have presented a paper regarding decentralization and accountability. If you can work on some kind of a database kind of a research work, I think that will be a wonderful kind of a thing for you, this paper, this approach. All the best. Thank you. Any questions from the audience? Now from the next session, I'll be pointing out towards the specific people who are sitting in the audience and asking them to ask a question, because I noticed some people who are just trying to pass off the time. So, seriously, we people are putting in effort, the speaker is putting in effort, you should be in that mode that you have to put your listening effort to that. So be kind enough for that, right? So with that note, I would like to call the next presenter, Dr. Himani Agarwal. The topic सर ने जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी सोसाइटी में जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिस पे बहुत सारा काम हमें करने की ज़रूरत है। मैंने रिसर्च किया है टीन एज मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मैंने डेटा प्लान किया, मैंने स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स फिलअप कराए हैं स्टूडेंट से, और मैंने उसका the main problem, like 1 in 5 adolescents are estimating to have diagnosable mental health disorders. ये conditions है नेशनल मेंटल हेल्थ रिसर्च सर्वे की, जो अभी लेटेस्ट इंडिया की गवर्नमेंट अथॉराइज ने प्लान किया है। और वास्तव में हमारे यूथ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लाइक पेरेंट्स आर कमिंग टू मी, दे आस्क कि मैम सब कुछ ठीक है पर ये पढ़ता नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, पता नहीं ये क्यों मोबाइल में लगा रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे बीच में हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के यूथ को अपने गोल तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम से, जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो देश है वो यूथ पावर है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत सारी बातें हमें करनी है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आज हमारी मेंटल हेल्थ, और वो भी हमारी टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ, जहाँ से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो द फर्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन। Like Indian adolescents face a highly competitive examination system that determines their college entrance and access to desirable career choice. The present study is done to find out the role of mental health status of adolescents in school organization. According to Mr. Kumar, mental health is an index which shows the extent to which the person has been able to meet the environmental demand, social, emotional or physical. A mentally healthy person shows homogeneous organization
or desirable attributes, healthy values and positive self-concept and scientific perception of the word as a whole. Scientific perception of the word as a whole. हम अपनी सिस्टर को ही सिस्टर नहीं माने, जो अभी राखी पे आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एक कॉमन फिनोमेना है कि मैं अपनी सिस्टर को ही सिस्टर नहीं मानूंगा, मैं अपने घर के आसपास वाली हर लड़की को जिसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी रात के अंधेरे में घर पहुंचने के लिए या टैक्सी सर्विसेज के लिए, उसकी भी मैं अपनी सिस्टर की तरह ही हेल्प करूंगा। Mental health is a combination of biological, social and psychological well-being. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब हम संस्कारों की बात करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हमारी सोशल, मैं अपने घर में अपने बड़ों की बात नहीं मानती हूँ, तो मैं अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरी बात मानेंगे। आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, भागे जा रहे हैं सब लोग फुल स्पीड में, पर किसी को ये पता नहीं है कि हमें एक्चुअली रुकना कहाँ है। ये है मेन प्रॉब्लम, ये है पुअर मेंटल हेल्थ के रीजंस। साइकोलॉजिकल वेलबींग में इंक्लूड है सेल्फ एस्टीम, कोपिंग स्किल्स, फैमिली रिलेशनशिप एंड ट्रॉमा। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय स्टडी इज टू असेस डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ अमंग 60 हाई स्कूल एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। मेथडोलॉजी 13 to 15 ईयर्स, जैसे कि नौटियाल सर ने कहा कि ये एक एज है जहां हम संस्कार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे से बच्चे को भी मेंटल टेंशन है, आज गेम नहीं जीता, हमारी टीवी हमें ये सिखा रही है कि आज मैंने गेम नहीं जीता तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मम्मी को मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। केलॉग्स चोकोस के ऐड में आता है कि आज गेम नहीं जीता, अब मैं क्या करूँ। गेम नहीं जीतना भी एक आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो पेरेंट्स को बच्चों को ये सिखाना होगा कि आगे बढ़ना, अच्छे संस्कार लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हार या जीत इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। Field of the study was conducted in the Saraswati Vidya Niketan English School of Jaipur City, Rajasthan. Sample for the purpose of present study, a group of 60 adolescent boys and girls studying in 9th and 10th standard was selected. In the next step, background, pro forma information were collected from the respondents. A standardized tool by Mr. Jagdish and Srivastava was used because standardized tool is a standardized measure to check the variable of a specific person. एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक टूल सेलेक्ट किया जिससे मुझे ये पता लग जाए कि इन बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं काउंसलिंग सेशन कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ। Statistical analysis, the data on the entire subject was compiled and transcribed on a master sheet. All the necessary calculations were done and then the data was analyzed statistically. This is the table जहाँ पर मुझे boys और girls की mental health में difference पता चला। ये बात तो पक्की है कि आज की लड़कियाँ mental health में boys से थोड़े से upper level पे ही है। Congratulations girls. मेंटल हेल्थ गर्ल्स की बेटर टू हियर बॉयज से, पर सिर्फ दो रीजंस में जहाँ पर परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड ग्रुप ओरिएंटेड एटीट्यूड्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, पर बॉयज़ की मेंटल हेल्थ और गर्ल्स की मेंटल हेल्थ में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी आए हैं जैसा कि आप लोग टेबल में देख सकते हैं। और फिर भी हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए काउंसलिंग सेशन डिज़ाइन करने की भी ज़रूरत है। एडोलेसेंट इज़ अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम। आजकल के एडोलेसेंट पे बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स का है, लड़कों पे ये प्रेशर है कि उनको फैमिली चलानी है। पेरेंट्स आर कमिंग टू मी कि मैम लड़की अच्छा पढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है मैम, पर अगर इसका क्या है, शादी कर देंगे, अगर ये अच्छी जॉब कर लेगी, कहीं लग जाएगी तो बहुत अच्छा है। पर लड़कों के लिए अभी भी पेरेंट्स, जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है उसके अकॉर्डिंग हम लड़कों के लिए अभी भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। पेरेंट्स स्पेशली जो हमारे एरिया के, जो जयपुर रीजन के पेरेंट्स हैं, जहाँ तक मैंने समझा कि वो बॉयज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स।
पर फिर भी गर्ल्स बहुत सारी चीज़ों में कोप अप करने की कोशिश करती हैं। गर्ल्स की कॉमन आदत होती है गॉसिपिंग की। जब हम गॉसिपिंग करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, तो हमारी मेंटल टेंशन बहुत कुछ कम हो जाती है, ऐसा है। और इसीलिए शायद हमने मेंटल हेल्थ के वेरिएबल में अच्छा परफॉर्म करा है। ये एक चार्ट है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि गर्ल्स की मेंटल हेल्थ एज कम्पेयर टू बॉयज़ अच्छी आ रही है। डेटा शो कर रहे हैं ये। फाइंडिंग्स रिवील दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। थैंक यू सर। फिनिशिंग पे है, गर्ल्स और बॉयज़ की मेंटल हेल्थ में गर्ल्स की मेंटल हेल्थ अच्छी आई, पर फिर भी हम लोगों को बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत है छोटी छोटी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। थैंक यू। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं और उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को काउंसलिंग की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। गर्ल्स तो ग्रुप में ऑलरेडी रह रही हैं, वो तो ग्रुप का एक हिस्सा है, तो उनकी जो मेंटल टेंशन और जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके ईज हो लेती हैं। सेकेंडली जो इसके कंक्लूजन्स आपने दिए हैं, कंक्लूजन्स हाईलाइट नहीं हो पाए, उन पर आगे से कंसंट्रेट करिए। ओके सर। थर्ड बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका एक स्पेशल सेल बना हुआ है फॉर दिस। ओके। उनके कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, यू कैन सी दैट। यस सर, डेफिनेटली। कंपैरिजन करके आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आपको दिस वेरी गुड, बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो पूरे आपके देख नहीं पाए। मैं चाहूँगा कि आपके रिजल्ट्स जो पर्सन है बैठे हुए हैं और सारी फैकल्टीज हैं और स्टूडेंट्स हैं, सबको मेरी तरफ से एक तरह से बधाई होगी। वो लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, इस सब्जेक्ट के अंदर एक बात आती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है या तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रिलेशन है, जो ह्यूमन रिलेशन जो है उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है, या पब्लिक लॉ प्रशासन के अंदर के जो मानव संबंध है उनका क्या रिलेशन है। जो मानव संबंध है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि ह्यूमन रिलेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन में मानव के क्या संबंध है। मेरा मानना यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी हुई अभी तक उसके अंदर माना गया है कि जो पब्लिक एड सब्जेक्ट है वो ये मानता है कि मानव के विकास में बहुत सी चीजें अपने अहम रोल अदा करती है। कोई भी संगठन जो होता है उसके अंदर एक चीज महत्वपूर्ण होती है, वो होता है उसका मानव संगठन। मानव संगठन जो है वो जब तक वो सही नहीं होगा तब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम नहीं करेगा। तो मेरा टॉपिक आज का ये है कि ह्यूमन रिलेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भैया, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का इस सेमिनार का, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फैकल्टी होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इशू रहा है शुरू से ही कि जो हमारा जो मानव संगठन है उसका यूज कैसे हो, उसकी उपयोगिता कैसे हो, उसको हमारे संगठन में हमारी किसी इंडस्ट्री में कैसे यूज लाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो प्राचीन काल के जो अर्थशास्त्री हैं, जो पुराने अर्थशास्त्री भी समझते हैं कि किसी भी संगठन को बनाने के लिए उस संगठन के अंदर कुछ न कुछ लोग होने चाहिए, कुछ मतलब कि जैसे इसके अंदर मैं बता रखा है आपको कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज एंड कोई संगठन होना चाहिए। लेकिन मेनली जो लोग इस चीज को भूल जाते हैं वो चीज है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, यानी कि जो मानव के संबंध है उस अप्रोच को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए अपने कॉलेज में देख लीजिए कि जो मानव के संबंध हैं उनको अगर हम ध्यान दें, या किसी भी कॉलेज में देख लीजिए, कोई संस्था में कोई संगठन देख लीजिए आप, कि यदि मानव के संबंधों को हम मुख्य रूप से वैल्यू देंगे तो वो संगठन आगे से आगे बढ़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने माना है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में मनुष्यों के संबंध को ढंग से सुधारा नहीं जाएगा तब तक लोक प्रशासन का विकास ढंग से नहीं होगा। जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी वो जानते हैं चीज को कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था उसकी लास्ट स्टेप ये मानती है कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनेगा, एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट बनेगा, एक वास्तविक सब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक कि किसी विषय में व्यवहारवादी स्टडी नहीं होती है तब तक वो सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ता है।
इसी कारण से ऑलिवर सोलर राइट जो कहते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो एक मशीन नहीं है। जो इंडस्ट्री है, जो कोई संस्था जो है वो कोई मतलब कि मशीन नहीं है, वो एक इंसान है। उसमें इंसान काम करते हैं, मनुष्य काम करते हैं। तो किसी भी संगठन में काम करने के लिए मनुष्यों के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, उनमें एक मतलब की मोटिवेशन की पावर होनी चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, जो संगठन के मालिक होते हैं, वो लोग इस चीज को, मैन पावर को, ह्यूमन पावर को अलग कर देते हैं और अपनी जो मतलब कि अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। प्रॉफिट पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है, क्योंकि वर्तमान काल में देखा जा रहा है कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो समाजवादी वर्ग की जो सोच है उसको कम करने के लिए अपने विचार प्रकट कर रहा है। और आजकल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो भारत में शामिल होती जा रही है। इसलिए ये ह्यूमन रिलेशन वाले जो सब्जेक्ट टॉपिक है, इसे अगर हम समाजवाद से जोड़ के देखें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा मानना ये है कि जो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, या कोई भी मतलब कि कोई संस्था खोलना चाहे, तो उसमें सबसे पहले अपने जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो वहाँ जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन सबको एक तरह से अपने जो मतलब कि नेतृत्व में बांधने के लिए उन सबको सेटिस्फाई करना जरूरी है, उन सबको मोटिवेट करना जरूरी है। यदि वो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर इससे ये होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका चल रहा है या जो उनकी जो कंपनी चल रही है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है वर्तमान काल के अंदर कि जो विद्वान हैं वो इस पर जोर दे रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मार्केटाइजेशन कैसे किया जाए, उसको व्यापारीकरण कैसे किया जाए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ये आगे कैसे बढ़ेगा, इसका विकास कैसे होगा, इसका विकास जब ही होगा जब उसे मनुष्य के विकास में, मनुष्य के संबंध में जोर दिया जाएगा। अगली बात इसके लिए है डिफाइनिंग ह्यूमन रिलेशन। तो डिफाइनिंग ह्यूमन रिलेशन जो है, जो मनुष्यों के जो मतलब संबंध है उनको डिफाइन किया गया है। मैंने इसे डिफाइन किया है कि जो मनुष्य की जो अप्रोच है, मानव की जो अप्रोच है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसको हम कैसे आगे रखें। कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन रिलेशन है, मैंने वही बात शुरू से कही आप लोग इसके अंदर कि मनुष्य के जो संगठन में क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था है, कोई संगठन है, वहां पर कर्मचारी एम्प्लॉय, चाहे वो ए ग्रुप के हो, चाहे बी ग्रुप के हो, चाहे सी ग्रुप के हो, डी ग्रुप के हो, यदि उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो संस्था ढंग से काम नहीं कर सकती है। उन लोगों का रिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो। दोनों ही संस्थाओं के अंदर अगर कर्मचारियों का आपसी रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो संस्था ढंग से काम नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि कर्मचारियों का अटेंशन, कर्मचारियों का सेटिस्फेक्शन भी इसमें होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक मेन चीज जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत सारे विद्वानों ने दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि एक डेफिनेशन मैकफर्ड दी है, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य का जो संबंध है वो एक तरह से किसी भी संस्था को बनाने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है। एक मिनट, मनुष्यों के इसके अलावा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सेमिनार हो रहा है सब्जेक्ट के अंदर, आई एम फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के मैं हूँ इसके सेमिनार के अंदर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल, ये टॉपिक दिया हम लोगों ने, ये इसलिए बनाया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो है हमारा, इसका मनुष्यों से क्या संबंध होना चाहिए, मानव से क्या रिलेशन होना चाहिए, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो। क्योंकि अदर सब्जेक्ट वाले तो इसको इस टॉपिक को, जैसे लॉ वाले हो, चाहे कोई ज्योग्राफी वाले हो, चाहे कोई इंग्लिश वाले हो, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, इस सब्जेक्ट को वो एक अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम जो पब्लिक एड वाले हैं, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अलग दृष्टि से देखते हैं। हम इसको मानते हैं कि ये जो एक रिसर्च हुआ है नया अभी वर्तमान काल में, हाथन प्रयोग करके नाम से हुआ है, स्टूडेंट जानते हैं एटल मियो का नाम, पब्लिक एड वाले, उन्होंने इस चीज को बताया था कि ह्यूमन रिलेशन जो है इसको बहुत ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब मेरी तरफ से सर या स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से संबंधित, कुछ भी एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आपके मन में जैसे भी क्वेश्चन आए वो आप ऐसे पूछ सकते हैं, आप वाला हो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप बोल रहे हो ना पब्लिक क्यों नहीं, ये सब्जेक्ट में पॉपुलर क्यों नहीं है? दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर के आप देखेंगे जितने भी कोचिंग संस्थान आईएएस के, वहाँ पर साइंस के आईआईटी के स्टूडेंट जो भी हैं वो सब पब्लिक एड को फ्री में ऑप्ट करते हैं, मीन्स में ऑप्ट करते हैं। इसलिए जो सब्जेक्ट है ये बहुत पॉपुलर है। अभी जयपुर में आपने सिनेमा नहीं देखा है, लेकिन आप दिल्ली जाएंगे तो 80% स्टूडेंट जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के और मेडिकल साइंस के वो पब्लिक एड और हिस्ट्री लेकर के आईएएस बन रहे हैं। इसलिए बॉडी अपने आप में है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि लोक प्रशासन, और ज्यादा स्टूडेंट आईएएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही बन रहे हैं। ठीक है, और पूछिए पूछिए। आप बोल रहे हो ना सर रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, तो सर वो कैसे होंगे? देखिए, रिलेशन अच्छे होने के लिए सीधी सी बात है कि जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एचआर की स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो मेन मालिक है, जो मतलब इस चीज किसी संस्था के जो हेड होते हैं, उनको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमन रिलेशन बनाने के दौरान ही वो संगठन विकास कर सकता है अपना।
और पूछिए। Sir, how can we maintain? कैसे हम मेंटेन करते हैं ह्यूमन रिलेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? देखिए मेंटेन करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई आईए जैसे कोई संगठन है और वहाँ संगठन में कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर है और एक जूनियर आईएएस ऑफिसर है। जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है अगर वो जूनियर आईएएस ऑफिसर को मोटिवेट करेंगे, उनको एक अच्छे प्यार से बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे तो अच्छे से रिलेशन अच्छे से मेंटेन हो सकते हैं। अगर उनको डिक्टेट करेंगे, उन पर निरंकुशता दिखाएंगे तो ढंग से काम नहीं कर सकते। ठीक है, और पूछिए। Thank you, Varun sir, for your wonderful session. I think the audience has cleared their doubts. Any questions from the audience? I think it's a token of gratitude from Biyani Group of Colleges for your valuable presence, your valuable knowledge, experience that you shared with us. Thank you very much, sir. And sir, personnel from their department will come over here, lady police. They will train our students for self-defense. Policy making, and the floor is open for the oral presentations first. First we'll be having the oral presentation, and it is a request to the presenters that we are going to provide you 10 minutes, a final call for you to wind up, and the second buzzer will be for the 10th minute. So all the best, and I welcome the first presenter, Ms. Aparna Ajit from Central University of Rajasthan. So as we all know, what the role of media in our society. So I don't think that you need a grand introduction. So let me come into my main points as the time limit is only 7. So we know that media has a great role in our daily life, and when we think about the present era where we are living, the emergence of social media. So how the social media created an impact on all people. Now we all know that it is the era of selfie kind of things, everything selfie or mobile phone, and we are trying to create things that is much easy and accessible for us. So here also when we talk about these kinds of things, the main impact this social media created on us is like that if we want to express something also, the media is really good. Suppose when we want to give a short clipping or if a dialogue also, whether it is from whatever part of the world to convey it to other person, it is very easy. The accessibility is very easy. Earlier in the days we have to wait, if we send a telegram also we have to wait for a long time. But now all those situations, we have come across all the situations in the scientific and technological era, and now everything is within seconds we can convey the message. So that is what the emergence of social media. Then when these social media or those kinds of things are trying to dominate our society or all over the world, what we can see is that people are trying to become heroes. That means individual heroes. They are trying to create their own impact in the society. But as we all know that individually we may be heroes, but when we are thinking in a collective way, we are zeros. Sometimes we have in such a situation. So when we are thinking it is the progress of something, when it happens also we are not taking or trying to have it as an impact to our society. We are trying to be confined within ourselves, and that is what we can see in the present era. I mean something in the world of technological advancement. And also we know that the online, social or broadcast media, they have given way for all the conventional journalism, and now it is the time for citizen journalists who is trying to convey news, and how can a person emerge out as a best person to convey the news to other people. Then when the new media comes, as we know that it is less expensive and user friendly, and the major thing which makes us use is the easy availability. Then coming to the smartphones. Smartphone means now even in the smart generation we all depend on the smartphones. Even if to store a number or whatever, we feel that it is easy to store in a smartphone, and we really don't know. Now we are going to such a situation that sometimes our blackboards and everything will be replaced by these kinds of things. Maybe technology, means how much means the advent of technology creates such a situation that we don't want even to have any kind of memory for. Our smartphone is capable enough to have everything, to store everything. So our individuality gives much importance to the smartness of these kind of things. Then the impact of media. Impact of media, first point which I would like to say
says about the media corruption. Corruption means it undermines the Indian democracy, or it creates a destructive kind of impact. And sometimes we feel that the media or the fourth estate, it does not have any kind of difference from the real estate. In such a situation now, it is moving on. Then when we talk about the human tendency for corruption, because whatever wealth we have, because men are always in a greedy form. As we know that even Mahatma Gandhi has once quoted, whatever we need, everything is there in our society, or everything is with us. But in order to satisfy our greed, it is really very much difficult. So if you are able to satisfy with whatever available, it is okay. But there is no way to satisfy our own greed. So same is the situation here also. When in these days man finds very difficult to adjust with whatever situation holds. He's trying to create or amass much wealth for thinking only of his own safety or his own security. Then in that situation, this once I have listened to the speech of P. Sarinath, the former rural editor of Hindu newspaper. In this one speech he has quoted, if patriotism is the last refuge of a scoundrel, what the reader wants is the last refuge of every intellectually bankrupt editor on earth. This is what now the situation goes on, and this is what the audience expects from a news, or what the spectators are waiting for. Mass media. We always say mass media, but where are the masses? This is a question which we have to ponder over, because most of the times what is missing is the masses, or because there is some kind of gap between the media when we communicate things, and there is some kind of gap created by some kind of vacuum created by media and mass, because the things when they convey it into another medium, what happens is the public opinion is there, but when it is converted, it becomes a published opinion. So naturally there arises a difference between the public opinion and published opinion. So how this happens? And when we think about these kinds of things, we can know that somewhere we can see the mass or the common people, they are really missing. Then the recent trends which we can see in media, they are like the paid news, we all know, then sting operation, then whistleblowing, then trial by media, and also the capital punishment. Here in whistleblowing, I think that we can talk about our Vyavasai Parisha Mandal or about the Vyabam scam. There also we know that some people come out as the form of the whistleblowers, and they are ready to give information to the government or other sources, because they wanted to bring to limelight what happens in the society. And it is really a good thing that now we have a Whistleblowers Protection Act. Otherwise, it will be a very difficult situation. Nobody will be ready to come forward to say what happens and all. But it is good that the media or there are some laws to protect these kind of people. And even though we have laws also, I don't say that this corruption, we can completely root out corruption of everything. But still also we can try to bring these people into limelight, because those who are trying to create a fake image in front of the people, those who are trying to cheat the people, even if politicians or whoever, when they contest in the election and when they come and ask for the votes, their purpose will be one. But when they come into the power, they completely forget the people, and what they are doing will be entirely different. So in this case, when some kind of scams happen, what the media do or what the whistleblowers do is really a commendable act. They are trying to bring for something into the attention of the society. Then even in the case of capital punishment also, we know that about Yaqub Memon's death penalty issue. In that also there is opinion for the mass. Mass have an opinion, and in the same case the media also have an opinion. So mass will be opinionated and media will have a different opinion. So in that case also we can't say which side we will stand, because sometimes even in news also many people are prejudiced, and we cannot say that even the editorial board which we write today is also completely based on the opinion of the editors. Then women, the voice of the marginalized. As we all know that majority of atrocities always happen to women, and women is considered as a sex object or a child producing machine or a kitchen kind of apparatus. And here I would like to deal with the Nirbhaya rape case and how it created an impact in the society, and that finally helped us to amend some laws related to the sexual offense. Even in this context also, whether we say that women they
they are having much role in the society or whatever position, but still also we can say that na stri swatantrya margadi, because women are always considered to be, they are somewhere caged, but let's hope that there will be a time when women will be liberated. Then conclusion, media is something politically free, but it is always imprisoned by profit. What kind of profit means? There are many profit motives, whether it is for a media which is run by a means newspaper or whatever run by a particular authority. So like that, there will be an imprisonment or some kind of chaining is there. Then, as the role, I think that an ideal role that can be played by a media should be, they can act as a watchdog. It should never act as a bloodhound. That means it should save the society rather than creating any kind of brutalities. Then illiteracy and ignorance. As we all know that whether we say that we have too much of literacy, but we can say that people are literally illiterate. And there is enough ignorance also. And when we talk about information and instruction also, we have a lot of information, but media or some these kinds of sources, they give us an opportunity, and that can be called as a medium for instructing things. So we should never take a dispassionate kind of view to analyze things. So when there is media, we will have our own opinion, but try to read all those things. That means never try to have an opinion or be opinionated on something as our own. So just try to have a dispassionate view. That should be something which we get or which we come across by reading many sources. In this sense, I would like to say that media has its own potentiality, and we should try to recognize the potentiality of it and how it acts as the major part in maintaining a role in democracy. Thank you. Policy making. First, I would like to begin by congratulating BICON for selecting such a relevant topic which needs discussion. Okay, so my paper is going to focus on the role of television media for highlighting policy issues. What is a policy? A policy is a decision implying impending or intended action. Media is one of the external groups influencing policy making at various stages. As political scientist Bernard Cohen in 1963 said, the press may not be successful in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling masses what to think about. Some of the probable functions of the role and the role played by media are anticipating problems in the proposed policies. Second, alerting the public of the problems. Third, floating alternatives to the proposed policy. Fourth, influencing the pace or the tempo of the decision-making process related to the policies. Fifth, contributing to the content of a certain policy that is in discussion. Next, informing public of how the policies are administered, and also it plays a role in evaluating the effectiveness of certain policies. Now, the method that I used for my study was observation of the content that I saw on various news channels, and also I have conducted a small sample survey of 50 respondents, and I had asked them about the major issues or happenings that happened in our country. And the answers that they gave were, number one was reservation issue, the next was Sheena Bora murder case, the Radhe Mas case, the debate on meat ban, then Prime Minister Narendra Modi's speeches, interactions and visits, Bihar elections, etc. But no one said anything about any policy matter that was discussed or taken up. Or for that matter, it was at least not in the minds or not in the psyche of the people whom I asked this question. It is very clear that issues in the respondents' mind and topics of debate amidst them trailed the events covered extensively by various mass mediums, which were of course very dramatic, very sensational, and it was aimed at getting more and more TRPs, and also the importance people accorded to events and happenings depended on the importance media gave to various issues. Now, some of the ways I believe in which media impacts policy making process are: first, since media lends voice to the voiceless and stands for the impoverished, mass media lends a platform to those voices and takes their issues to the policy makers. In short, it acts
as a critical connect or conduit between people and policymakers. Second, media draws and sustains public attention to certain issues and even sensitizes them, because of which many a times people take to streets and host candlelight marches. Now, the speaker who spoke just before me highlighted how Nirbhaya case was was a case which was talked about by and large by people of our country, and because of the pressure that that issue created, we had fast-track courts established, and our policy makers were very fast in bringing some stringent laws into place. So this is how policy makers sometimes are pressurized by the portrayals that they see over various mediums. Since policymakers want to keep their voters content and happy, media activism pressurizes them to mold policies suiting masses' demand and their line of thought. Third, media through reports, debates, discussions, etc. persuades or dissuades public for or against a certain policy. So, given the surge in number of channels, the increase in the number of newspapers that we have, increasing literacy rate, and of course the democratization of information because of the new media, I believe that the impact that media is going to have in the coming days over policy making issues is going to be more, given that those issues are covered by our mass media. There are a few problems that I would like to highlight over here, which are coming in the way of media playing an effective role as in the process of policy making. One, since policy domains are long-term in nature, when it comes to coverage of those policies, it works against the traditional newsroom norms of timeliness and novelty. So because policy debate is going to take time and it is going to stretch, by the time a new event comes in and media channels or newspapers, since they want to cover that news event, they don't run those policy debates on their channels. This is one problem. Second, given the TRP-driven sensationalist approach of media houses today, given the lure of business gain and lack of understanding of policy issues by majority of reporters in the present time, or for that matter, the intimacy that our journalists share with policymakers and personal biases that they have, these things come in the way of media playing an effective role in the process of policy making. Now, I would like to conclude by highlighting a report that was brought out by John R. Fisher on news media functions in policy making. This was published in 1991, long back, in Canadian Journal of Communication. He suggested that media in majority places around the world is more influential in transmitting policy-related information to public rather than having an impact on policy makers. So I conclude by agreeing with Mr. John R. Fisher in the Indian context as well, and hope that Indian media plays a greater role in influencing policy making process actually, rather than just disseminating information related to policy matters to our public.